Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We continue reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 13, text 35. Kshetra Kshetra Kshetraya no yor evam क्षेत्र क्षेत्रेज्ञ योरेव अंतरम antaram jnana chakshusha अंतरम ज्ञान चक्षुष bhuta prakriti moksham cha भूत प्रकृति मोक्षम ye viduryanti te param. ये विदुर्यांति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु बिना बना लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देह आत्मा बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य ये तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतरक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है, परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। So Krishna is telling to Arjuna in this verse that see through the eyes of knowledge, seeing through the eyes of the scriptures. So Krishna is telling Arjuna, those who see with the eyes of knowledge, they can understand the body is different, the soul is different, the super soul is different, and like this one can gradually understand how to get out of the material world. Because we are thinking we are the body, we are the mind, and based on that we are doing so many actions, and with that actions we are getting reaction. That's what keeping us here in the material world. But Krishna is telling here that understand that you are the soul, not the body. That the body is made up of this 24 material elements. And Krishna is telling Arjuna, you are the soul, and that there is a super soul. Atma and Paramatma, they are different. And the entire what we are seeing around us,
this entire material cosmic manifestation, there is just that this material elements are there, the 24 material elements, and the soul is there. And of course, the super soul has entered the heart of every living entity and every atom of the universe. So Prabhupada is saying that we need good association of the devotees. We need to hear about God from Bhagavatam, Bhagavad Gita. Gradually, then one can understand, oh, this is matter and this is spirit. Then gradually one can go on further to uh, liberation, self-realization. Here in our body, we have this gross body which we can see, and we have the subtle body, which is made of mind, intelligence, false ego. So our mind is interacting, the body is interacting, and becomes our life. But then there is a soul who's there inside this body, and there is the super soul. So we have to understand there are two. Then we are the soul, next to us sitting is the super soul. And we are inside this body, which is made of 24 elements. And the more we see through the eyes of knowledge, then we can get out of this material world. We can go back to the spiritual world. So we finished the 13th chapter with this, and then going on to chapter 14, the three modes of material nature. Shri Bhagavan Uvacha. श्री भगवान उवाच Param Bhuya Pravakshyami. परम पूर्य पवक्ष्यामि Jnanam Jnanamuttamam. ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् Yaj Gyatva Munaya Sarve. यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे Param Siddhim Ito Gata. परम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं कृष्ण को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा फलीभांति समझ ले तो उससे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। Krishna, in the 13th chapter we just read, Krishna said, see through the eyes of knowledge, understand that this material nature is different than the soul,
and then there is a super soul, and Krishna gave us the process of knowledge, process of devotional service by which we can realize the knowledge. In verses 8 to 12, that's the process. So to realize the knowledge. And then now Krishna is going to speak about the modes of nature in this chapter. This is also Krishna is continuing to give knowledge to Arjuna. In the 12th chapter, 7 to 12, Krishna is speaking about bhakti. He's revealing his position of the absolute truth. He's saying Mata Parataram Nanyat, that, there's no one superior to me, Krishna says. He says everything is resting on me as pearls are resting on a thread. Then he says, Bhaunam Janmanamante, Jnanavan Mam Prapadyate. He says that after many births and deaths, one who is in knowledge surrenders unto Krishna, knowing him to be the cause of all causes. And he says such a soul is very rare. He also says to get out of the material world, surrender to me. Otherwise, it's very difficult. So 7th to 12th chapter, Krishna is explaining his position, his vibhutis. Now he's telling Arjuna about the modes of nature. He's telling modes of nature. In 13th chapter, Krishna was saying that develop knowledge with humility. He begins with humility and engaging in devotional service. Humility means accepting I am not God. I am servant of God. That is real humility. Why? Because that's our real position. That's a constitutional position of every soul. So that is real humility. When we can understand our position in relation to God, understanding I am not God, but I am servant of God. Then in this chapter, Krishna is explaining about the modes of nature. Krishna is saying, understand this knowledge and get liberation. He said in the past, many sages have understood this knowledge of modes of nature and got liberation, got in perfection. So this is what Krishna is telling to Arjuna now. Idam jnanam upashritya. Idam jnana upashritya Mama sadharmyam agata. mama sardhavayam agata Sargepi nopajayante. sarge api na upajayate Pralaye na vyathanti cha. प्रलयेन व्यथयन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से साधर्म में प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना निजी स्वरूप नहीं त्याग पाते। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर
यह आध्यात्मिक स्वरूप बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से भिन्न है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में, जिनमें आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है, वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर मनुष्य गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। Krishna is saying, be fixed in this knowledge and you can attain a transcendental nature like my own. And then you don't need to be in this world of birth and death. So, transcendental nature of Krishna, Satchit Ananda. So, that liberation, one gets his spiritual body in the sense one realizes that they are spirit soul, aham brahmasmi. But one does not lose his identity. We are always individual souls. Even after we realize I'm the spirit soul, we continue our existence as individual spirit souls. Krishna says in second chapter of Bhagavad Gita, we are eternal. The soul is eternal. So we are eternally individuals. It's not that we are individuals right now because we are in the body. No. No, in the spiritual world, we continue as individual souls. In the spiritual world, the Vedas teach us that the spiritual world, the transcendental world, there are the spiritual planets. And in the spiritual planets, they are the liberated souls. And over there, they are engaging in devotional service to God. So even after liberation, the soul does not lose its identity. The soul continues to remain an individual, each and every one of us. That's what we have to understand, because we may think, oh, after liberation, we don't exist anymore, or there is nothing, or there is just some light. No, the Vedic scriptures, they explain to us that there is a spiritual world. There's so many spiritual planets in the spiritual sky. And after liberation, the liberated souls go there to live in the spiritual world, in their spiritual bodies. So they continue to remain individuals. And they engage in devotional service, which is the eternal activity of the soul. Here in the material world, everything is contaminated by the three modes of material nature, Rajogun, Tamagun, and Sattvagun. So even our knowledge is, what do you say, influenced by these modes. Then the knowledge which is above the modes is called transcendental knowledge. And that's the knowledge we get from the scriptures, from the Vedas, Bhagavad Gita. Why is Bhagavad Gita so important? We are getting transcendental knowledge, which is above the modes, is spoken by God Himself. So as soon as one realizes this knowledge, one realizes that, oh, I am spirit soul. Then he understands God is the supreme spirit and I am part and parcel of this spirit. So then one can understand that that I am not this body, I am spirit soul, God is the supreme spirit. So like this, he's on the same platform as the supreme, as God.
because God is spiritual. He's supremely spiritual, and we are individually spiritual. So after liberation, one goes to the spiritual world, engages in spiritual activities. It's not that, you know, here Prabhupada is saying those who have no knowledge of the spiritual sky. So people who don't know that there is a spiritual world, that after liberation, the souls go there in the spiritual world, they live in their spiritual bodies, and they have spiritual activities. They think that, oh, after liberation, the soul does not exist anymore or becomes formless, does not remain an individual, that there is no variety, there's nothing, maybe just some light. No, the scriptures, the Vedas explain to us that there is variety here in the material world because there is variety in the spiritual world. Mhm. That's what we have to understand. There, for example, the reflection. The reflection is there in the mirror because the object is there in front of the mirror. The reflection of the sun is there in the water. We can see the sun reflection in the water because the sun is there in the sky. Similarly, this material world, there is variety, there is form, because the real reality, the real form, the real life is there in the spiritual world. In the spiritual world, the souls have spiritual forms, spiritual body. They are doing spiritual activities. And this spiritual life is called devotional life. So, devotional service is eternal activity of the soul. In the spiritual world, there is no influence of goodness, passion, and ignorance. Everything is on the platform of Shuddha Sattva, pure goodness. And the quality of the soul is the same as quality of God. Quality is same, Satchit Ananda, eternal, blissful, and knowledge. God is full of uh, bliss, full knowledge, and God is eternal. So the soul, being part and parcel of God, have the same quality, Satchit Ananda. The quantity is different, the position of God is different. Nobody can become God, but one can realize, oh, I am part and parcel of God. Then how can we get this knowledge? To obtain such knowledge, one must develop all the spiritual qualities. And how to develop the spiritual qualities? We hear, we engage in devotional service. We hear from Bhagavatam, Bhagavad Gita from the devotees. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And like this, then at the end of life, we go to the spiritual world to have a spiritual life, the eternal life full of happiness. In the spiritual world, there is no anxiety, there's no fear, there's no birth, death, old age, disease. It's a permanent situation, blissful, full of happiness. Mama yonir mahad brahma. Mama yoni mahad brahma. Tasmin garbham dadami aham. Tasmin garbha dadhamyaham. Sambhava sarva bhutanam. Sambhava sarvabhutanam. Tato bhavati bharata. ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ कहता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ कुछ घटित होता है वो क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा
के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महातत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में 1:1:9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद ब्रह्म नाम रूप अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देता है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वो प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान in this material world, manifestations of living entities in this material world. So Krishna is saying total material substance called Brahman. And he's saying that in this Brahman, I put all the living entities. The souls are put. The souls are put here in this material world by God. So we have to see in this material world, what's happening is a combination of the material elements, the 24 elements, earth, water, air, fire, ether, then the senses, the sense organ, the knowledge acquiring senses, so on and so forth. Kshetra is the body, Kshetragya is the soul, knower of the body. And this entire combination of material energy and the soul is happening by God's will. It is God's will that this entire thing is happening. So the Mahatattva is like a black cloud, kind of. The Brahman. Brahman extends everywhere. The spiritual sky is called Brahman. This Brahman is coming from the body of Krishna. And we say, where's the light coming from? Where's the sunshine coming from? Sunshine is coming from the sun. In our houses, we have the light. Oh, where's the light coming from? It's coming from the bulb. So where is this Brahman coming from? It's coming from body of Krishna. Krishna is a person, and his bodily effulgence is this Brahman. And Brahman is spread everywhere. And on this Brahman, all the spiritual planets are situated. Now, in one corner of this Brahman, in a tiny portion, the Mahatattva is there. It's like a black cloud. This is where the material world is created. This is where all the material universes are created. This is where conditioned souls like us are put inside by God. So, and we can see that the material world, it's also situated on the Brahman. It's a tiny portion.
compared to the entire Brahman. This material world is very tiny. And all this is happening by the will of God. We are put inside here in the material nature by the will of God. Material nature is acting here by the will of God. So this whole entire combination, material world, the living entities put, it's all happening by the will of God. So Prabhupada is explaining to us, we see sometimes the scorpions are coming out of the rice. So someone may say, oh, the rice is the cause of the scorpion. The rice turned into the scorpion. But that's not right. That's not correct. Rice can never become scorpion. Rice is matter. Matter cannot give life. What happens is the scorpion had gone inside. The scorpion laid the eggs, and from the eggs, the baby scorpions are coming out. The mother scorpion went into the rice. She laid the eggs there, and then from there, baby scorpions are coming. So material nature is not the cause of the souls. We souls are not products of matter. We souls are part and parcel of God. We are put here by God in the material world. The soul is not created by material energy. Yeah, the body is created because the body is material, but not the soul, and we are the soul. And the soul, we are put here by God. We are part and parcel of God. So life comes from life. Life does not come from matter. Material elements are dead. They cannot give birth to a soul. So how we come here in the material world is because God has put us here. And then, of course, based on our desire, based on our karma, we get different types of bodies in this material nature. So the Lord is the cause of all the manifestations of living entities in this material world. We are put here by God, and we have been reading in Bhagavatam. Then why are we put here? Why some souls are here in the material world, some souls are in the spiritual world. Well, the souls who want to imitate God or want to become God. So we are then put here in the material world to give us a chance to rectify this desire, because our original position is that we have loving relation with God, that we serve God with full love. But when we want to imitate Him, we want to become God, then we are put here in the material world. So reading on, Sarva Yonishu Kaunteya Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavanti Ya Murteye Sambhavanti Ya Tasam Brahma Mahadyonir Tasam Brahma Mahatayoni Aham Bija Pradapita. Aham Bija Pradapita। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। इस श्लोक पे स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता, भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता
कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों से प्रकट होते हैं। Krishna is saying it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. So the soul, where does the soul come from? Comes from Krishna. We are part and parcel of Krishna. So Krishna is the original father of all the souls. Here in the material world, we souls, we have a material body. Although we are the soul, we are covered by the material body. The material body is given to us by material nature, based on our previous karma, our desires. The material body is given to us by material nature, but we, the soul is not product of material nature. The soul is coming from Krishna. Krishna is the original father of all the souls. All the souls are part and parcel of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So we can see that even on the higher planets, within this material world, even on the higher planets, the soul is there inside a material body. Lord Brahma, his body is also material. One day Lord Brahma also has to die, although he lives for a very, very long time. Lord Brahma, he is a soul and he's covered by a material body. Like this, the combination are there. We ourselves, we are the soul, we are inside a material body. The animals, the dogs, the trees, the fish, the birds, even the bacteria, the living entities in fire. It's all the same, the soul and covered by a material body. So the soul is put inside here in the material world by Krishna. And the material body we are getting is from material nature. So we have to understand that we are spirit souls. We are not the body. Sattvam rajas tama iti सत्वम रजस्तम इति guna prakriti sambhava गुणाः प्रकृति संभवा nibadhananti mahabaho निबधनन्ति महाबाहो dehe dehinam avyayam. देहे देहिन अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सत्तो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वंशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को विभिन्न प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। So we are the soul. We are the soul, and now, because we are put inside this material nature, we have a material body. We are covered by this material body. Actually, we have nothing to do with this material world because we are spirit souls. We should be in the spiritual world. But because of our desire, somehow or the other, we have come here in the material world. And the material world, the material nature rules us with these three modes of nature, binds us. Guna is called rope. We are bound to this material world by these ropes: goodness, passion, and ignorance.
And under the influence of these modes, we are getting different types of bodies. Sometimes the body of a dog, sometimes body of Lord Brahma, sometimes body of human being. It's this, his individual soul is there. The body is different based on the modes. And depending which body we are in, we are forced to act according to that nature. Like we are in the body of a human being, we are forced to act as a human being. Although we are spirit soul, we are not the body. And this is the illusory energy, the entangling energy of Krishna. So the modes, that is the cause of the varieties of happiness and distress. 8,400,000 different species are created, different bodies are created under the different combination of these modes of nature. Tatra sattvam nirmalatvat. तत्र सर्व सत्व निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम. अथवा प्रकाश कमनामयम दुःख संगेन बध्नाति. सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी और कोई अत्यंत कर्मठ, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण के है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक विचार। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और क्योंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। So the mode of goodness.
Mode of goodness is the best mode of the material modes. Goodness, passion, ignorance, the mode of goodness is the best. And then Krishna is saying, what are the symptoms? So in the mode of goodness, one is happy. In mode of passion, there is a lot of desires. So there's a lot of activity. And in mode of ignorance, one does not know what to do, what not to do. So this Prabhupada is explaining, these psychological manifestations are causes of the entity's conditioned status in nature and how we are conditioned. So goodness, the mode of goodness. What happens? Mode of goodness, the person who's in the mode of goodness, he's wiser than others. He does not have too many of the material desires. And he's more inclined to do good, pious activities. He's not engaged in sinful activity. And so that's why it's happy. He's happier. He does not have many sinful reactions because he's engaging in pious activity. So he has more knowledge, more happiness. But what happens is he starts feeling himself better than others. Because after all, it's a material mode also. And then he also starts thinking, oh, I'm very happy in this position. Why do I get out of the material world? Not understanding, oh, actually, I'm spirit soul. One day I have to give up this body. So it makes them bound. Mode of goodness is also binding because there is greater sense of happiness. There's greater sense of knowledge. So then one gets bound. And one may keep taking birth like that. Many, many births one may take in the mode of goodness. So some examples are the scientist, the philosopher, because they are higher in knowledge, the poet, so they are able to improve their living condition. And then one can still be bound to the material world. One is bound to the material world by this mode of goodness because this general feeling that, oh, I'm better than others, I'm happier, I have so much knowledge. That keeps the attraction to be here in the material world. So that is the mode of goodness. But it's also illusion because still one forgets, oh, I'm spirit soul. Still one is thinking I'm the body. Rajo ragatmakam vidhi. रजो रागात्मकम विधि Krishna Sangha Samudbhavam. कृष्णा संगम समुद्र भवम Nibadhanati Kaunteya. तत् निबध्यांति कौन्तेय Karma Sangena Dehinam. कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है
कि मनुष्य अपने कर्मों फलों के संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ये न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मापदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए? So in the mode of goodness, one has gotten more knowledge, he's happier. The Brahmana represents mode of goodness. He's cultivating knowledge, he's trying to understand the truth. A mode of passion, there's a lot of desire. Lot of desire, lot of activity is there. The attraction is there, man for a woman, woman for a man. The desire is there to enjoy more, more. Need some status, some honor, some nice position, a nice situation in the life. And so the desires are there. To fulfill the desires, one has to work hard. So then one gets attached to the fruits because the desire is there. One works hard to fulfill the desire. So one gets attached to the fruits of the result. And in this way, one keeps coming to this material world. And here Prabhupada is pointing out, whole material world is more or less in the mode of passion. In the earlier Vedic times, advanced civilization means life of the Brahmana, mode of goodness. Advanced condition was mode of goodness. Now in modern civilization, advanced means mode of passion. So we just heard that mode of goodness also, the souls cannot go back to the spiritual world. They're not liberated. They're still continuing in this world of birth and death because they are bound by the mode of goodness. So then what to speak about mode of passion? In mode of passion, one is bound even more tighter because there are so many more desires. There's so many more actions and reactions. So the rope is tied even more tighter in mode of passion than goodness. Already goodness keeps the person in the material world. Then passion keeps one even more. Even Tamasva Ajnana Jam Viddhi. तत्सत्व ज्ञानजः विधि Mohanam Sarvadehinam. मोहनम सर्वदेहिनां Pramadalasya Nidrabhis. प्रमाद आलस्य निद्राभि Tan Nibadhanati Bharata. तत निबंधन्ति अध्यानाति भारत। हे भारत पुत्र, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिकूल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान जा सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथा आत्मज्ञ ज्ञानवर्तम
विपर्य ज्ञान जनक तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्य है, उसकी संतानें भी मरेगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुण व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निंद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। So we heard that Sattva Gun, knowledge, the soul is always wanting to get more and more knowledge. He's happier, he's advancing spiritual. His situation in life is happy. Passion, a lot of desires, a lot of work, a lot of activity, fame, honor, wants all that. Now, ignorance is madness, sleeping. This is also, of course, binding. This is what makes the soul keep coming again and again in the material world. Cannot understand that, oh, I am not the body, I'm spirit soul. And in that ignorance, one continues to engage in material activities. So the Vedas are saying under this ignorance, one cannot understand a thing as this, as it is. We are seeing everyone around us, our ancestors died, people around us die, but we think we will continue here permanently. We act, okay, we are going to be here permanently. That's kind of a madness. All the energy goes in maintaining the body, and there is no desire for spiritual knowledge. There is no kind of endeavor to try to understand the spiritual knowledge. So this is all mode of ignorance. Mode of passion, at least the person is always active, there's a lot of desires, he's doing good work. But mode of ignorance is more inactivity, more sleep, madness. And this is, of course, binding, and that keeps the soul here more and more in the material world. So we'll stop here for today. Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Hare Krishna.